Thank you again. Happy to be back. We are still in the war, trying to close out on Ayodhya Kanda. We have the last few chapters. We have to go to chapter 119 to close. So today we are trying to close these 6 chapters. Now, quickly, for the sake of the audience, where are we? Can you give me where does Ayodhya Kanda, where does it work? Give me a background to it quickly. Can I hear from anybody, including the Zoom audiences? Where did Ayodhya Kanda start, brother? Where did Balakanda end? As soon as as soon as Ram Sita got married and then they left, and Bharata went to his Nainital. There the Balakanda ends and the Ayodhya Kanda starts. Very nice, thank you. That is so when we start Ayodhya Kanda, with Dasharatha's desire to coronate Rama. News spreads, Manthara comes in to the scene, and then we have her poisoning Kaikeyi resorting as per Manthara's instruction, asking for the 2 boons, one for Rama to be banished, the other for Bharata to be enthroned. And post that, we see Rama, a big set of discussions happening between Kaikeyi and Dasharatha, and finally Rama being told to go. We see the greatness of the personality of Rama. Rama's glory is not the crown jewel he wore on his head. Rama's glory is the jata that he had on to go to the forest. That is Rama's glory. So Ayodhya Kanda truly brings out that great glory and great personality of Sri Rama, who was so equipoised. So Rama heads out. People are torn. In fact, they don't want to live in Ayodhya anymore. They want to follow Rama. Rama had to escape from the people, leaving them behind. Moves on, goes to Guha. A very interesting meeting with Guha. And then Rama crosses the river and heads Ganga first, Yamuna next, and then on to Prayaga, and then moves towards Chitrakoot. This is Rama's journey. Bharata comes tracing Rama, and we are now in the section where Bharata has come to meet Rama in Chitrakuta. And at this place, Rama Bharat Milan happens. And then there is very detailed discussions which I covered in the prior chapter. Abhi isse aage hum leke jayenge. Remind me on the Hindi. We'll go beyond this for today. So, what happened here? What's happening here is 2 brothers are fighting. Nothing new about it. Usme kya naya baat kya hai? Gar ki kahani. Bhai log jhagdte hain. Par ye jhagda to ulta hai. ये उसको देना चाहता है, वो इसको देना चाहता है. उधर तो एक छोटा बर्तन है, उसके लिए लड़ाई हो जाता है. Yes? ये मेरे को चाहिए, वो इसको चाहिए. This is the other way around. And there we saw in the end of the last segment, the people, ये दोनों भाइयों के बीच में ये झगड़ा देखते हुए, people are in tears, not tears of agony, but tears of joy. आनंद किया अश्रु, क्योंकि ऐसे भाई कभी किसी ने देखा नहीं. 2 भाई लड़ते हुए कि ये बोल रहा है कि तुम्हें आकर राज्य पालन करना है, और दूसरा बोलता है नहीं मैं नहीं लूंगा, तुम्हें ही करना है राज्यपाल. तो इधर ऐसे लगता है भरत नाम का एक और मतलब है. भरत का मतलब है जो राज्य पालन करना, जिसको बार समझा जाता है. भरत, for him it looks like it's a burden. मुझे दे दिया, मैं आनंद खुशी से ले लूंगा. It is not burden, it is a source of joy and enjoyment for me, or for any of us. But for Bharata, it was a source of burden. इसलिए his name itself is
is Bharata is also one other meaning that is given to the name of Bharata. Anyway, तो दोनों के बीच में ये वाद संवाद हो रहा है. तो आज एक स्पेशल टोन लेते हैं. राम दशरथ भरत को बताते हैं, देखो भैया, हमारे पिता ने ये आज्ञा दिया, इसमें कुछ शायद तुमको यू डोंट नो द बैक स्टोरी टू इट, इसके पीछे कुछ कहानी है. तो करके फिर बताते हैं कि जब शादी हुई उनकी, उसी समय ऐसे एक एग्रीमेंट था कि जो कैकेयी का जो पुत्र है वो राजा बनेगा. ऐसे एक बात भी हुई थी उस समय पर. बहुत कालों का समय बीत गया. इसके बाद दैट इज, इनका तो पुत्र थे ही नहीं बहुत सालों के लिए. बहुत साल बाद पुत्र पैदा हुए. तो बहुत पुरानी कहानी है. और कैकेयी इतनी she was so into the family, and when राम जब आए, राम जब बड़े हो गए, राम को देखते हुए सबका मन, तो राम हर गए. किसी को कुछ याद नहीं आया इस विषय पर. और कैकेयी का भी ये इच्छा था कि राम ही राजा बने. तो किसी ने ये बात लिया ही नहीं. It never came up in the scene. But suddenly मंत्रा आकर उसको याद दिलाती है ये सब. तो उस कारण ये वापस आया. तो ये राम उसको, भरत को बताने की जरूरत नहीं. यदि हम में से कोई होता तो वो पुरानी चीज वो क्यों बता के उसका केस स्ट्रॉन्ग क्यों करे. उल्टा उसको चिपका दो इधर ही, छुपा दो, चिपका नहीं छुपा दो इधर ही, क्यों बताए उसको. राम को doesn't have to say. So Ram is explaining why you are more rightful to that throne, to Bharata, you know. So beautiful. So then बताते कैकेयी ने वापस पूछा, ये पहली तय हुई बात थी. So why are we so obsessed about this, you know. So he brings this out. तो फिर ये प्रश्न उठता है कि दशरथ ने फिर राम को क्यों राज्य देने के लिए वो बात क्यों, वो भूल क्यों गए. why did he forget that. इसीलिए you see, कुछ परिस्थिति में कोई कुछ हमसे बोलता है, so you will see somebody is not reacting very strongly to it. Even वो गलत चीज है तो भी वो react नहीं कर रहा है. means people of the previous generation, mostly they know the history, they have seen the background. उन्होंने देखा है कि वो लोग ने, उसका बाप ने मेरे लिए क्या क्या किया, वो सब उनको पता है, हमको पता नहीं. हमारे दृष्टिकोण में लगता है ये चुपचाप क्यों है, ये आदमी ये बकवास कर रहा है, ये चुपचाप क्यों. why is he so quiet about it. Why was Dasharatha so soft about this particular aspect? Why did he take it lying down? Accept क्यों किया. So because there is also a background to it, and because he is satyavadi, इसीलिए बाद में बताया जाता है सत्यवादी ददौच. Because वो सत्यवादी था, therefore he could not refuse. So he said, ठीक है. Instead of becoming full scale Raja, 14 years she is asking for. Let it happen. That is also another background to this. तो ये राम बताते हैं. And then राम बताकर फिर बोलते हैं कि इस शास्त्र का एक injunction है. In some circumstances you can actually use a lie. That is also given scripturally. And he says that untruth at the time of a wedding. This loophole is a bad loophole. Yes. A lot of weddings get into trouble because of this. Yes. And in order to preserve one's relationship, there is a very thick relationship between a man and a woman, for instance. It's a conjugal relationship. In that conjugal relationship, something is a little amiss, but it's going to rock the nest. जो इतने सालों से करा है, there is something, there is a relationship there, and there is something which is a one-off, a completely out of the way thing, but it happened because of some circumstance. To be able to, in the bigger picture, this is a very tough zone to deal with. In the bigger picture, so that you don't rattle the nest, you don't put the kids into trouble, you don't, you know, it's a very. So that's another. These are all. This is from Upapuranas. These are some other quotes. This is not directly in the Ramayana. This is other quotes from the Upapuranas. So there are various considerations. So, and for the well-being of the people,
another thing, and for the well-being of the people at large. So here Dasharatha, out of these options, Dasharatha is using this option किसके लिए उपयोग कर रहे हैं? लोग की भलाई के लिए राम का राजा बनना सर्वस्व इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने जो भरत के लिए जो कमिटमेंट पहले दिया गया था, he underplayed that commitment and overplayed this commitment for that sake. Why am I talking about loopholes? I'm talking about loopholes so that for the bigger good and for the good of a family or a particular circumstances. और एक और कहानी है, एक साधु थे, साधु के आश्रम में एक I don't remember the exact story, right? साधु के आश्रम में एक आदमी भागकर आ गया. He is not a thief, but somebody is again behind him to kill him. तो उस परिस्थिति में the sadhu, when those thieves, when the soldiers come looking for him, तब साधु बोल देते, वो soldiers पूछे आए क्या कोई इधर, तो बोलते कोई आया नहीं. तो उसके जान बचाने में जो उन्होंने जो झूठ बोला, that is not considered. So there are different circumstances. In order to save a very dire situation, you may be able to take this thing of a lie, but otherwise one should not. Rama is talking about this. तो फिर राम बताते हैं कि देखो, पिता ने दो डायरेक्शंस का इंस्ट्रक्शन दिया. एक डायरेक्शन था मेरे लिए और दूसरा डायरेक्शन तेरे लिए. मेरे लिए डायरेक्शन दिया कि वन में जो जानवर है उनका राजा बनो तुम, और तुम्हारे लिए डायरेक्शन दिया कि अयोध्या में जो भी नगरवासी है उनका राजा तुम बनो. जो इंस्ट्रक्शन दिया वो ऐसे फॉलो करना है, वही हमारा कर्तव्य है. We don't need to question and this thing. Then he said there's one other thing. राजा का उद्धार, राजा तो देखिए आजकल ये हम लोग का दिमाग में आता भी नहीं है. Maybe my father told you something, that man is long gone. Yeah. So वो बुढ़ा आदमी था, कुछ दिमाग चल नहीं रहा था, ठीक, कुछ भी बता दिया तो उसको all that, I will not fulfill all that, get lost, go. This is the current spirit of this thing, no? But Rama's spirit was exactly the other way around. He said the words that my father has given will not go in vain. उन्होंने जो वचन बोला उनका सदगति के लिए ये बाधा बनेगा, उनका सदगति के लिए ये बाधा बनेगा. जो इसलिए उन्होंने sometimes, the story of Harishchandra, going on a bit of a tangent. Anybody knows the story of Harishchandra? सुना है Harishchandra? क्या Harishchandra का what is the core theme? सत्यवादी. हरिश्चंद्र इन्हीं के परंपरा के थे, राम के पूर्वज. हरिश्चंद्र को क्या हुआ? Harishchandra got into a lot of trouble with Vishwamitra. When he gave the promise to Vishwamitra? In a dream. In his dream, Vishwamitra came and told him that I want to do a big yajna. And I need a lot of wealth for that to be able to conduct. इसलिए आप मुझे wealth धन प्रदान करें. तो राजा ने बोला तथास्तु, I will give you this much. So next morning Vishwamitra comes there. Vishwamitra does not know. Vishwamitra has planted this whole thing. See, Siddh Purush jo hote hain, they can actually get into your mind, into your dreams. There's a lot of games that can be played. This is what Vishwamitra did. Vishwamitra came in his dream and he took a bow from him. He wants to prove to Vasistha, who is his opponent, that your disciple, which is the same Vasistha is standing here, the same Vasistha was the guru for Harishchandra, that your disciple gave me a boon, but he didn't follow. That is, gave it, he thought, in the normal course, this fellow will never, कभी अपना वचन टुकराएगा नहीं, तो इसलिए let me test him. Dream में जो वचन दिया, उसको निभाता है कि नहीं, वो test करने के लिए आया. He came to test him that way. So this is the family for whom, जिनके लिए सच्चाई जो है, सत्य is everything. So he gave him that dana in his dream. When Vishwamitra comes the next morning, he says, all that wealth is waiting for you. So please, you can take it.
तो विश्वनाथ सिंह अभी भी फंसा नहीं. Oh, what Harishchandra went through. There are some very old movies on Harishchandra, Raja Harishchandra, very old movies, Hindi movies, worth watching. Sincerely, worth watching. Pick that up and watch that. It's so beautiful. इतना मुश्किल किसी ने देखा नहीं. Harishchandra's kahani comes up again in Mahabharata, I believe. He's told this story to say that there are people who have gone through इतना कष्ट भुगता है लोग ने. ये युधिष्ठिर आप जो देख रहे हो कुछ बड़ी बात नहीं है भैया. राम का कहानी भी महाभारत में इसीलिए आता है. जब ये वनवास में थे तब बता रहे हैं, तो आप तो जुआ खेल कर वन में आए. वो कुछ भी खेला नहीं. वो कैकेयी का खेल था जिसके लिए एक्सेप्ट करके वन में आए. सो इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस. सो हियर ही इज सेइंग पिता का जो वचन है, व्हाटएवर ही सेड, ही इज गॉन. शायद उधर there were 20 लोग थे, 100 people were there finally when he अलविदा दे दिया. On what terms, what was the condition? It's a family thing. उसको उल्टा करना है तो बहुत easy है. Yes, has to be fulfilled. तो फिर बोलते हैं कि आदि काल में ये स्टेटमेंट था, गया श्राद्ध की बात होती है. तो बोलते हैं कि अनेक लोग पुत्र कौन है. When you go and offer respects to elders, they say Bahuputtravati. May you have many sons. Bahuputra is a very painful situation. आज की परिस्थिति में ये ऐसे क्या ब्लेसिंग है ये. एक तो पुत्रवती भवा, एक ही पुत्रवती भवा, पुत्रीवती, whatever it can be, whichever way we can play it today. But why Bahu? That question is answered here. It's very interesting. पुत्र कौन है? पुन्नामो नरका यस्मा पितरम त्रायते सुतः. इति नरक जो है उससे जो उद्धार करता है पितरों को, वो जो है वो पुत्र माना जाता है. तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः. Yes. On the other hand, why many sons? Because the aspiration that at least अनेक पुत्रों में से एक को वो मौका मिलेगा कि वो गया में जाके पितरों के लिए श्राद्ध कर पाएगा. Because आदि उन कालों उन दिनों में you can't just press the make my trip, book a ticket and just go land in Gaya in the whatever 3.5 hours and then do what you have to do. Was not the case. It is a complete yatra. You have to take a detour from whatever you're doing. It meant possibly a year to go and come back. Yes. So it wasn't a simple thing. So who would do it? Therefore, it's nice to have many children. If not this generation, then the Sagara story. Yes, how Ganga came. The forefathers had been burnt, ashes were all over the place. How are they going to get purified? Ganga लाने से उनका पवित्रता मिलेगा. वो गंगा लाने के लिए 4-5 पीढ़ी हो गए. Then Maharaj Sagara came and then he did what he had to do. So he says, पुत्र का काम है. Putra's job description is to be able to save the father from Naraka. Now, if you and me come together and we say, बाप ने जो भी बोला वो सब उल्टा है, वो ठीक समय पे नहीं बोला, तुम आ जाओ वापस राज्य, तो पिता का वचन तो कभी unfulfilled रहे. What do you say for unfulfilled? पूरा नहीं हो. अपूर्ण रह जाएगा. तो उसका कारण हम बने. हाँ. So that's not our duty. So he explains that very clearly, and then says, you rule the men, I'll rule the animals. That's our description. This is chapter 107 that we just did. We move on to chapter 108. Chapter 108 is very, very interesting, a very different discussion. We think people speak atheism. आज eloquently बहुत लोग atheism के बारे में नास्तिकवाद बहुत करते हैं, और हम सोचते हैं, oh, he's an intellectual. He's not even speaking as strong atheism as this chapter in Rama. Chapter 108, worth reading to understand नास्तिकवाद क्या है, उसका आधार क्या है. आज का सब नास्तिक इसके सामने डाउन हो जाएंगे. That's how heavy this is. This is a difficult segment to go through. ये सब रामायण में है, आधा लोग को पता नहीं है. Yes.
All this is sitting in Ramayana. Listen to the different argument. Jabali was a mantri. Mantri थे दशरथ के यहाँ. बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण थे. उन्होंने ये देखा ये परिस्थिति कि एक्चुअली राजा राम अभी आएगा बनेगा तो लोग के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा रहेगा. और अभी ये भरत के छत्र छाया के नीचे है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि भरत इच्छुक हैं कि राम आए और सबकी कल्याण के लिए भी अच्छा है. तो उन्होंने क्या किया, सडनली स्टार्टेड नास्तिकवाद. अभी एक एक करके आर्ग्यूमेंट्स आते रहते हैं और रामा सब इज annulling each of them very beautifully. तो अभी जाबाली बात करना शुरू किया. तो फिर बताते हैं कि देखो राम थोड़ा लॉजिकल रहना चाहिए, पिता का बात टुकराना नहीं चाहिए, ये वो बी प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल वर्ल्ड. हम सब जन्म लेते हैं अकेले, मरते भी अकेले. तो ये बीच में कोई अटैचमेंट आ जाता है, ट्रेन कंपार्टमेंट में कोई को पैसेंजर के साथ आप मिलते हो और फिर बोलते हो तू मेरा बाप है, ये है, बहुत इतना, ऑल दिस टू मच अटैचमेंट, ऑल दिस इज टू मच. who is your real relation? In this janma you have, you will have somebody else. So what is this is, he's not talking janma at all. He says reincarnation is not there. This is his argument. He completely negates reincarnation. So he said we just came together. जैसे पानी में दो twigs आ रहे हैं, मिल जाते हैं, पानी और ज्यादा जब आगे जाते हुए वो बिछड़ जाते हैं, उसपे वो क्या, हमारा हाथ का कुछ चीज नहीं है. Why are you getting attached to it? पिता माता गृहम, all this इसका कुछ मतलब नहीं है. No, the semen and blood. Why the term blood is used? Because that's what you see when it comes out. Yes. So the term is clearly saying when semen and blood come together, that's how a child is born. So ultimately, the only thing he did is he became your seed-giving father. That's also by circumstance. वो भी कुछ बड़ा credit की बात नहीं है. What are you so attached to for this? Reality ये है कि आपको इतना कष्ट भुगतना नहीं है. कष्ट भुगतने के लिए थोड़ी तुम पहला बच्चा पैदा हुआ, राजा बनना है, इंद्र जैसे रहो. यस, ये चार्वाक मुनि का फिलॉसफी भागवत में भी आता है. ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. आपको क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर करके खाओगे तो भी, जीवन जीते हो तो भी, अच्छी तरह घी से बनाया हुआ चीज. ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. नाइस घी, सब घी, सोप्ड इन घी. चपाती ऐसे खाओ आनंद से, live like that happily. So he says दशरथ तो चला गया, तो अभी क्या तुम बात कर रहे हो? प्रैक्टिकल रहो. पूरा राज्य तुम्हारे लिए वेट कर रहा है. तुम क्या ये तपस्या करने के लिए आया? आधा लोग जो तपस्या करते हैं इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम. सिर्फ शरीर के लिए दे आर गिविंग वेरी हार्डशिप. एंजॉय लाइफ. Then he says, and you see what all these people are doing, the Shraddha ceremony and all. Brahman को खिलाते हैं, ये पिंड देते हैं. It's a waste of food. You want better atheistic arguments? All this is sitting in Ramayana. And I'm not speaking one word out of these verses. This is all sitting in Ramayana. This is the beauty, and we worship this Grantha, including these verses which speak atheism. These are all worshipable for us. That's how Sanatani, हमारे Sanatan Dharma, how we can accommodate all ideologies. Yes. All these. This is his philosophy. This is Jabali's argument. This is not Ramayana. This is Ramayana representing Jabali's atheistic views in this particular thing. So then he says, if you feed a Brahmana, will that food reach your dead father? So he says, all this is some sentimental stuff. Be practical. Somebody wrote all this. This is all manufactured religion. आज बोलते हैं ना सब लोग, किसी ने लिख दिया ब्राह्मणों के लिए, सब ब्राह्मण का सब बड़ापन करके लिख दिया, किसने कोई ब्राह्मण आके लिख दिया, वो जाबाली बोल रहे. This is thousands of years ago that this Grantha is saying this is completely manufactured religion.
So what are you doing this? जो नजर के लिए दिखता है दो आंख में वही सच है, बाकी सब झूठ। This is Jabali's argument. Very strong, very heavy segment actually. And then this is chapter 108. एक पूरा chapter dedicated to Jabali. Jabali की जय, हरे कृष्ण. Chapter 109. Rama refutes Jabali. Now, I've done a bit of a hurried revision on this, so I'm a little disorganized in my overall thoughts. But Rama's refutal is quite interesting in its elements. तो पहले बताते हैं कि बता रहे हैं, देखो जबाली, आप जो लॉजिक आप दे रहे हैं, इसका फल क्या होने वाला है? इसका फल है कि भैया लिव लाइफ किंग साइज, बाकी सब कर्तव्य और सब भूल जाओ, माता पिता भूल जाओ, वो भाड़ में गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है सबको, किसी को कुछ नहीं होता है. किड्स, यू डोंट हैव देम, बेटर टू लिव विदाउट, इट्स मोर फन. Everything, it is just self-centered and to live happily for oneself. Forget the world, forget the norms, forget everything. तो बोलते हैं इससे एक राज्य या सोसाइटी कभी हो नहीं सकता है. तुम जाके जंगल में जी सकता है, ऐसे फिलॉसफी है तेरा, तो जंगल में जी सकता है, और यू कैन बी चेंगिस खान. Yes, the Mongol who came and who took whatever he wants. You can be like that, but otherwise you can never live within a society. Good conduct is important for a noble person, and with that you can manage an entire society. And these rules and regulations are here for that particular purpose. If I am going to follow something like what you are saying, enjoy my life, what my superior has instructed. ये पिछले दिन का ये Bharata's argument was ulta. I'll just share that and come back to you. Bharat said very beautiful thing. He said, देखो एक आदमी एक आम का गुठली भूमि में डालता है और उसको पानी वानी देता है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है? 5-10 साल बाद मेरे को आम मिले. इसी तरह दशरथ ने तेरा पालन पोषण किया, सब कुछ किया. क्यों? क्योंकि तुम आकर एक दिन राज्यभार सौंपे, उसलिए तेरे को पालन पोषण किया उसको. अभी तुम क्या जाके वन में क्या जी रहे हो? ये वन में जीना इजी है, लोग का पालन करना और मुश्किल है. तो योर पतली गली पकड़ेगी, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. This is not going to help anybody. So don't get the patli gali. This is the tough job to do. Don't put the tough job on my shoulder and you happily live in the forest. You may be eating whatever you get, but this is the easier thing to do. That's Bharata's argument. Here Rama is using the same argument to say that पिता ने जो वचन, जो इंस्ट्रक्शन दिया, वो न सिर्फ पिता, वो मेरा गुरु है, वो मेरा राजा है, मैं उसका प्रजा भी हूं. So you see, this Rama is giving priority to the two roles of Dasharatha. जो वो राजा है, ये प्रजा है. राजा ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको मानना पड़ेगा. एक, वो पिता है, मैं पुत्र हूं, उसलिए उन्होंने जो वचन दिया उसको मानना पड़ेगा. 2, so I am actually in both ways I'm bound to follow what has to happen. So he says he is a leader. He instructed me. And if मैं लीडर बनना है, यद्यत्, which is that verse? श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते यद्यद् आचरति श्रेष्ठः. जब संधि होता है तब श्रेष्ठ. Yes, then you can use the sa. Otherwise you have to split it up. यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु. गीता का श्लोक है. गीता का श्लोक में क्या बताया? एनीबॉडी? ट्रांसलेशन. श्रेष्ठ जैसे आचार करते हैं इतरो जना, बाकी लोग जो है वैसे ही आचार करेंगे. भैया मैं तुम जैसे बोल रहे हो अभी, ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, जस्ट मेक मेरी, हैव फन, लिव लाइफ किंग साइज, यही मैं करूंगा तो पूरा राज्य ऐसे हो जाएगा. ये अयोध्या जो है सब लोग उसका प्रशंसा करते हैं, बिकॉज इट्स सच अ वंडरफुल किंगडम. सब लोग अपने अपना कर्तव्य करते हैं. ये धर्म
और हमारे शास्त्र में दिया हुआ जो चीज है वो बंधे रखता है. It's keeping our whole community bound so beautifully together. Everybody doing their respective roles. Therefore, do not deride this. Be very careful. Then he says, truth is what prevails in this world. There's a very beautiful segment. Bhagavad maybe a shlok. I dealt with this originally, if you remember. I dealt with this over 2 sessions, just on Satya. 2 full 1.5 hour sessions we dealt with. Anyway, now we don't have the time for that. So then, he says, therefore, Satya jo hai, is the most important thing. And we should all follow Satya and Dharma are concomitant facts. They are one in with the other. And we should all follow those principles is very, very important. Then he says there are few principles that really govern. हमारे जीवन के लिए बहुत मुख्य कुछ principles है. दश तत्तम इष्टम उतम चैव तप्तानि च तपांसि च वेदाः सत्य प्रतिष्ठानः तस्मात् सत्य परो भवेत्. Charity, worship, sacrifice, austerities, जो वेद में दिए हुए हैं, are the foundation of truth. तो ये सत्य, ये धर्म, on what basis this has been put in place? It has been put in place based on this. हम हर एक आके मेरे को ऐसा लगता है, I want to do like this. I think I want to do like this. I want to do like this. If everybody is going to do, why does a country establish a law? भैया मुझे okay, gay and lesbian rights. There is a law which is acceptable to a country. Some states will accept, some countries will not accept, some countries will accept. Which they want to live in a particular way. They think it is right for them, but it need not be right. So you have to have something called law which is going to bind that society in place. Otherwise, everything, har ek jisko jo aaya wo karega. So then things are going to get really wild. Therefore, it is important to actually follow. So then, there is a beautiful segment which from Ayurveda which talks about why is there reincarnation? What are the different arguments? Jiva Goswami gives a few arguments on that. Today we are on the run mode. We will not be able to. And it's not only in Sanatana Dharma, the importance of Satya. If you see other dharmas, there is a beautiful example about Prophet Muhammad seeing somebody in a marketplace. Either he is selling corn. वो क्या करता है, ऊपर जो कौन है वो सब अच्छा कौन रखा हुआ है, नीचे जो है सब कोठा, all problem and stuff. So when Prophet Muhammad sees that, he tells this guy, what you are doing is against God. Yes, because you have to go by the norms of truth, and that's important. Biblical, there is in the Bible also there is a similar quote and a story. बात ये था कि पहले जमानों में लोग सदैव ये बात सोचते थे और दिमाग में था कि हम जो भी कर रहे हैं वो देख रहा है, not CCTV. वो CCTV आज भगवान का असिस्टेंट है. यस, वो CCTV सब जगह पर है, इसलिए लोग इधर उधर देख के फ्रॉड करता है. But the reality is the fact that people knew that he is always, everything is monitored. And भगवान को मालूम है हम क्या कर रहे हैं, हमारा दिल में क्या है, बाहर क्या बता रहे हैं, अंदर क्या है. He knows everything. He can't hide from him. He can't hide away any of these things. This consciousness was very strong in the past. ये था, इसलिए लोग का आचार जो था, it was in a much more straight manner. Even if they do something wrong, your base nature makes you do something really wild. You try to come and do some prashchitta. Yes, so at least that is a repentance. आज कुछ भी करो, live life, things है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, you know. Just like, you know, daru is not something that's truly part of our culture. Not the way the Europeans, the Westerners can be. It's not us. For them, it's an everyday. पानी तो पीते ही नहीं है भैया, है तो beer. There's no water at all. It's just beer. Yes. So, if we are going to start to follow and exactly replicate their life, how
suitable is that going to be for us? So the consciousness that we had, that the Lord is always, and this is not only Sanatana, this is there in every religion, that God knows everything on the day of judgment, when you go to the pearly gates, all same story. Yes, and that kept people within norms. So Rama is telling all this to him. And then he says, जो व्यक्ति सत्य बोल नहीं पाता है ना, वो जो देवता का पूजा करता है, जो पितरों के लिए प्रदान करता है, even they will not accept, because he is apatra. He is not actually fit to. So either दुनिया के लिए कुछ भी, दुनिया में completely fraud, then you want to whitewash all that by doing some puja for some devata and whatever you want to do. It's not going to take you anywhere. So Rama says that's how thick Satya is. That's how important Satya is. He says, Rama Vigrahavan Dharma. एक बताया जाता है कि धर्म के लिए एक रूप देने की इच्छा है किसी को, तो एक ही रूप है वो राम. That's only this thing that. So he says, for me, Satya is part of me. It's an integral part of me. You can never take it away. If you take that away, I don't exist. So it's an integral part of me. You can't take it away. निकाल नहीं सकते सत्य मुझसे. तो बताते हैं कि लोग तीन तरह के नीच कार्य करते हैं. First thing is, शरीर से कुछ, we do something wrong. But that happens after sufficient chintan. Yes, you contemplate. So what is that? What are the three steps? Smarana, Shravana, Manana, Nididhyasa. That's a separate thing. Prabhupada says this, that you first contemplate, thinking, willing, and doing. Prabhupada says these three things: thinking, willing, and doing. So first you start to think about something, and that goes on in the smarana. Like this happens even in many other aspects of life. Say, I don't like something that Simran is doing. So one day I'm thinking, so I'm thinking in that manner. Then within me, there is a feeling that I'm substantiating it again and again to say, there is something wrong with that. I keep working on this, adding. Then one day, whether I want it or not, it will happen. I'll speak heavily with the other person. So every act has these three aspects, and that's what Rama is talking about. Committing something which is sinful or painful, contemplating in the mind, sochana, and then the third he says is different from the usual, from the what we are talking about here. To speak unto God. I didn't speak like that to her. No, she's telling you some kahani. These three are degrading activities, and all of these three constitute Satya. To do, to think, and to speak. These three are aspects of Satya. So he's talking about that. So it's a very complex. These two chapters you're seeing are very complex. Ramayana सिर्फ कहानी है, वहाँ सब बैठकर आनंद से सुन लेंगे शायद. That was the expectation that was here. But this is not. We are not just doing the Ramayana kahani in 7 days, finish the whole Ramayana. Here we're going into chapter by chapter, verse by verse. I'm not skipping a single verse. Every verse, 80% coverage. There are some skip verses, but 80% coverage of entirety. That's our goal, because nobody stipulates timeline. Krishna's grace. पूछने वाला कोई नहीं है. Why so slow? तो बात ये है कि मैंने पिता को वचन दिया कि मैं उनका वचन निभाऊंगा. Again, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो. You are very dear to me. I am very happy to fulfill. But in comparison, जो पिता को मैंने जो वचन दिया हुआ है, उसका comparison में ये कभी जमेगा नहीं. Then he says, this is the beautiful heart of Rama.
इसे देखो, जब मैंने पिता के सामने उन्होंने जो वचन दिया उससे बद्ध होने का मैंने एक्सेप्ट किया, उस समय मैं कैकेयी के चेहरे पर जो हंसी, जो हैप्पीनेस जो मैंने देखा, I don't want to express that. I committed to that happiness of Kaikeyi in front of Dasharatha. And that happiness of Kaikeyi matters. उसीलिए उन्होंने इतना कठोर एक जो दो vows उन्होंने लिया, वचन जो उन्होंने दिया, कैकेयी को प्लीज करने के लिए दिया. So when the happiness मैंने, who cares for Kaikeyi in reality? Who will care? It's that rascal, that woman, what she did. उसको ऊपर हाथ तोड़ दूंगा, पांव तोड़ दूंगा, उसको क्या करूंगा, you know what, that's what will be in our this. He's saying I don't want to see that उसके चेहरे पे जो smile है, I don't want to expunge that smile. This is Rama's words. So he says, मैं जो इधर जी रहा हूँ वन में, ये एक बहुत पवित्र जीवन. It's difficult, but it's a very pure, auspicious living, and we are very happy doing this. और फिर बोलते हैं, देखो ये जो मैंने पिछले जो आर्गुमेंट दिया, बताते हैं ये भूमि जो है इधर जो भी पैदा हुआ, ये कर्म भूमि, ये हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने क्या किया, उन्होंने हमको क्या दिया, हमारे शास्त्रों में जो है उसको निभाने के लिए हम लोग इधर पैदा हुए, नहीं तो भूस लोका में पैदा हो जाते हैं हम लोग. Yes, you know where भूस लोका is. Yes, we just live on you know, that's not our culture. कभी थोड़ा सोशल होता है. So और फिर बताते हैं कि ये श्राद्ध बड़ों के लिए जो करते हैं. How many of you have heard some talks on gratitude? Anybody ever maintained a gratitude journal? That's what this is. Sanatani gratitude journal. अपने पितरों के लिए, अपने बड़ों के लिए, जिन्होंने ये शरीर दिया, जिन्होंने हमको संस्कार दिया, जिन्होंने हमको बुद्धि दिया, उनके लिए we see to it that on an annual basis we are doing something for them. We are remembering Mother's Day, Father's Day. Why you should be भैया, you know, Male Paksha, that is your father, mother, and forefathers' day, month for that matter. Yes, those are the times that have been given. So those who are expressing, जो gratitude express करते हैं, वो सदैव खुश रहेंगे. जिनको किसी भी विषय में they are not happy, they are not able to thank, they are not able to feel indebted that हमारे लिए इन्होंने ये किया, ये मनोभाव जिसपे नहीं है, वो कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसको ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा अपने जीवन में. अपने जीवन में ये जो भी करता है, nobody will ever show gratitude to that person. जैसे हम अपने पिता, अपने बुजुर्ग लोग से हम व्यवहार करते हैं, वही coin is going to repeat to ourselves. A very interesting small thing. My wife one day asked my son, she asked him, hey, when we become old, will you take care of us? You know, the boys don't want to have a conversation. You are the next what game to play, you're a 5-year-old. He said, yes. Then he's on to whatever he has to do next. You know, but for a woman, this yes, no is not enough. No, she has to pull it out of the guy. So then she said, oh, so what do you mean by yes? So, I'll come visit you every year. Matters, no? This is what we do, this is what we show. उनको सब register हो जाता है. Whatever it registers, that's what they're going to reciprocate to us. So gratitude is very, very important. We show gratitude, we will receive gratitude. And that cycle of gratitude is what makes the whole thing happy. So it's very, very important. So then फिर बोलते हैं, I think Rama is really, very rarely you will see anger in Rama. 2 or 3 times you will see. In this space, he says, you know, आप जैसे लोग इधर कैसे आ सकता तुम? How did you land up in this space? Then he says, actually, I have to blame Dasharatha for nurturing somebody like you in this place.
So he says it's very important that everybody carry out their prescribed duties. Otherwise, evam pravartitam chakram, Bhagavan Gita mein batate hain, aise maine ek chakra banaya hua hai. Everybody has their respective duties to do. We have our duties towards our children. We have our duties towards our parents. No, wo baap kaun hai? Wo aise, just we came together, the sperm and the ovum came together, and here I am, lo and behold, I happen. It's all straight out here. So then Rama blames Dasharatha for that, and finally he says, so Jabali, when he hears this heavy refutal from Rama, he gets a little shaken. He says, actually, I only said this because of my enthusiasm. मैं भी इच्छुक था कि आप राज्य में वापस आए, और मैं देख रहा हूँ कि भरत भी बहुत इच्छुक है कि आप राज्य में, सब लोग इच्छुक हैं, तो इसलिए मैं ये बोल दिया. So this is Rama's refutal of Jabali. That's chapter 109. So we move on to chapter 110. अभी वशिष्ठ अस्त्र निकाल रहे हैं राम को वापस अयोध्या कैसे ले आए. So everybody is trying to convince Rama, but Rama is atal, unmoving from his thing. So वशिष्ठ क्या बताते हैं वो देखते हैं अभी. We'll close on time. पहले वशिष्ठ जाबाली के लिए कुछ शब्द बोलते हैं. ये ऐसे नहीं है. इस परिस्थिति में he used these arguments just to convince you. But he knows this, and he knows reincarnation. He knows beyond that. He knows all of those things. पर ऐसे आपको कन्विंस करने के लिए उन्होंने ऐसे बात किया. फिर वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु वंश का पूरा लीनिएज बोलते हैं. Who was born विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत. ये पूरा इनका वंश का पूरा वो गीता का श्लोक था. But other than that, then sagara असमंजसा कुकुत्स रघुकुल इसलिए नाम दिया जाता है. Then अम्बरीश नहुषा, फिर अजा from अजा दशरथ. इसके बारे में पूरा बताकर ये लिस्ट क्यों बोला उन्होंने, ये पूरा लिस्ट क्यों दिया उन्होंने 40-50 जनरेशन का, to say that in each generation the person who ruled was the first born. The person is first born. तो ये कुल का रीति है, तो तुम उसको क्यों टकराओगे. Is the first. That is chapter 110. I made it really short, but that's the crux of what we do. What we see in that particular chapter. Now, chapter 111, we are seeing Vasishtha speak further. Very beautiful instruction, very beautiful point. श्लोक बताता है पुरुषस्य जातस्य पुरुषस्य जातस्य. Person gets born here. Bhavanti puravasत्रयः. He naturally gets 3 gurus. आचार्यश्चैव काकुस्थ पिता माता च राघव. आचार्य एक है और इसके अलावा पिता और माता ये राघव. ये तीन जो है तीनों आपके गुरु हैं. Yes, very important. And then he says, ठीक है, तो आपके गुरु आप पिता मान रहे हो. अभी पिता ने जो वचन दिया आपको निभाना है, पर ये समझो तेरा पिता जो है उसका गुरु मैं हूं, उसका भी गुरु तेरा भी, पर तुम्हारा पिता का भी गुरु मैं हूं. और फिर बोलते हैं देखो पिता का कर्तव्य है, ऑफ कोर्स योर कर्तव्य टुवर्ड्स योर फादर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर आप राजा हैं इसलिए प्रजा के ओर भी आपका कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट. दैट शुड नॉट बी फॉरगॉटन. यू हैव अ कर्तव्य टुवर्ड्स योर प्रजा आल्सो. और अभी पिता का देहांत हो गया, माँ अकेली है, तो उसका भी देखभाल करने का आपका वो भी कर्तव्य है. So that does not, you can't escape those. There is an old mom should not be neglected. वृद्धाय धर्मशीलाय. अरे भैया वो सिर्फ किटी पार्टी और जुआ खेलने वाली माँ है तो दूसरा बात है. शी धर्मशीलाय वृद्धाय धर्मशीलाय मातु न अर्हसि अवर्तितु. This kind of a mother, such a wonderful woman, should not be neglected under any circumstance. Then he says, I see, according to what I see,
There is no harm in your taking this. So this is Vasishtha's final this thing. There is no harm in taking it. फिर बोलते हैं कि देखो इसमें एक और चीज है, तूने मनमानी किया, हाँ नहीं बाप ने कुछ भी बोला अभी आया मान लिया. No, you have not done that. In front of all your people, you are refuting every argument. You don't want to come back. But I am sadhu. Yes. तो हर विषय में गुरु, साधु और शास्त्र. तो साधु रहते हुए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं और मेरे एडवाइस के ऊपर आप चल रहे हो. यदि आप मनमानी कर रहे हो तो वो दूसरा बात. इधर मनमानी की बात नहीं है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, मान लो. तो राम का इंस्ट्रक्शन है, राम का रिस्पॉन्स है इसके लिए. बोलते हैं देखिए वशिष्ठ जी, जो पिता और माता ने जो हमारे लिए किया उसका कभी कोई चुका नहीं सकता. Simply taking them on one trip to some 4-day vacation somewhere, once in 3 years doesn't absolve you. Yes, of anything. There is no way you are going to be able to repay something for it. Therefore, मैंने जो पिता को वचन दिया, under no circumstance am I going to. In the normal course, somebody will think this is, literally verging on being obstinate. Yes, but for the right things, that is dharma. Yes, this is coming from before. तो क्या करते हैं, kusha grass लेकर बोलते हैं, I am going to put kusha grass on the ground and I am going to protest here, lying on one side. I will not move from there and I will not eat till you are going to accept what I am going to say here. तो फिर भरत बोलते हैं सुमंत्र को, कृपया कुशा ग्रास के लिए रेडी करो. नॉर्मली सुमंत्र सब सुनेंगे, इधर सुमंत्र सुनने के लिए तैयार नहीं है. सुमंत्र देख रहे हैं भरत को. भरत ने जो इंस्ट्रक्शन दिया इमीडिएटली आफ्टर वो राम को देख. इसका मतलब है राम का नॉड अप्रूवल, यस और नो देख रहे हैं. तो भरत इज डिसअपॉइंटेड. अभी तो इसमें भी मेरा मनमानी नहीं चलेगी, मेरा इच्छा किधर जाने वाला नहीं है. सो देन रामा सेज, भरत मैंने क्या किया गलत, that you are punishing me in this way. If somebody does something wrong, अभी कुछ ब्राह्मणों के बारे में कुछ some big debate was happening recently. You think ब्राह्मणों के लिए बहुत rights दिया गया है. It was misused in many ways, no doubt, and there is no denying that. Untouchability, there were many other things which became a problem out of that. There is no denial of that. But a Brahmana can never even fight for his right. He can't fight physically. He's not supposed to take arms. That is why Vishwamitra, जब साधु बने तो राम को आकर ले गए. विश्वामित्र ये सब असुरों को नाश कर सकते थे, but he is not even supposed to be working for his own, to defend his own body. Even that he is not supposed to do, and therefore he didn't want to engage. वो बोला तुम आओ हमारे लिए सुपारी रखती है राम से, थ्रू रामा. इसी तरह ब्राह्मणों के लिए कभी कुछ किसी ने कुछ उनका छीन लिया, कुछ किया, something happens, the brahmana's mode of offense is this satyagraha. तो बोलते हैं, तो राम बताते हैं देखो ये ब्राह्मणों के लिए है, क्षत्रिय के लिए नहीं. जिसका हाथ में बल नहीं है, पराक्रम नहीं है, क्षत्रिय के लिए ये तो है ही नहीं. If you have a problem, I did something wrong, fight me. That is the kshatriya's duty. If it is a brahmana, वो उपवास कर सकता है. सत्याग्रह के नाम पे अभी सीसीटीवी है, वो बड़ा प्रॉब्लम. सीसीटीवी नहीं था तो बीच में कोई साइड से कुछ लेके आ जाए खा लेता, वो 10 दिन 20 दिन चलता था. आज होता नहीं है, सब जगह कैमरा हो जाते हैं. प्रॉब्लम. तो
फिर राम का इंस्ट्रक्शन है, देखते हैं और बोलते हैं भरता समझ लो, वापस जाओ अयोध्या। तो भरत अपना लास्ट अटेम्प्ट करते हैं। सब लोग सब चारों तरफ खड़े, तो लोग से भरत देखते हैं और बोलते हैं इतना देर मैं बात करता आया, अभी मुझे फिक्स हॉल्स की जरूरत है। इसके और मैं कुछ बोल नहीं सकता, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं। यस, यू रिक्वेस्ट रामा टू कम। यस, यू रिक्वेस्ट रामा टू कम। अयोध्या वासी हमारे जैसे लोग थोड़ी थे, तो वो पहले बता रहे हैं ककुस्तम अभिजानामः सम्यक वदति राघवः। जो भी राघव ने बताया, ये ककुत वंश जो है उनका क्या रीति है हम जानते हैं, प्रजा तो है, देखा है वो आपके पूर्वजों, सुना है उनके बारे में। और उस नापतोल से यदि मैं देखता हूं तो मुझे साफ साफ नजर आता है कि राम जो बता रहे हैं दैट इज द करेक्ट। पीपल आर गिविंग दिस वर्डिक्ट नाउ। अभी तो भरत का हवा निकल गया इसमें से। एंड देन फिर बता रहे हैं कि एशो एशो अपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति। दिस ग्रेट पर्सनालिटी जो है पितुर्वचसि तिष्ठति, अपना पिता का वचन में हट करके पकड़ा हुआ है, वो तो छोड़ेगा नहीं पिता का वचन, इसलिए इधर कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने साफ भरत को बता दिया। तो भरत सबको अनाउंस करता है, ठीक है आपने भी ऐसे बोल दिया। मैं बोल, आप सबको तो मालूम है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मेरा इच्छा कभी नहीं था कि मैं राजा बनूं। मैं कैकेयी को बोला नहीं, मैं इधर था भी नहीं, पर ये ऐसे परिस्थिति हो गया, पर ये मेरा इच्छा कभी नहीं। इसलिए मैं एक चीज करता हूँ, पिता का रिक्वायरमेंट था कि एक मन में जाए, एक अयोध्या में रहे, हम विल स्वैप स्पेसेस। मैं इधर वन में रह जाऊंगा, तुम अयोध्या। छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भरत इज लाइक relentless, fantastic arguments, but भगवान के ऊपर कितना निर्भर थे, how much he loved Rama and how much he loved his dharma as a क्षत्रिय, what he wanted to just now। तो राम देखते हैं, हंसते हुए बता रहे उसको बदलने का हक हमारे हाथ में नहीं। पिता ने जो इंस्ट्रक्शन तेरे लिए एक और मेरे लिए एक दिया हुआ है, why will we do some switching game? Yes, we can't play these games, ऐसे नहीं चलेगा। We don't need to find loopholes। loophole कब लिया जाता है, तब एक धर्म संकट आ जाता है, उसको निभाने की इच्छा है, पतली गली पकड़ने की इच्छा नहीं है, निभाने की इच्छा है, पर परिस्थिति मुश्किल है, so then you find some way to work it out, not to reverse the whole thing itself in exact। So he says, पर आपने इतना निश्चय कर लिया कि मुझे ही राजा बनना है, तो मैं अभी मान लेता हूं आपने जो मान लिया। क्या राम ने मान लिया वापस अयोध्या आने के लिए, पर बोला 14 साल। तो अभी तक मैंने वो वचन दिया ही नहीं राम ने कि मैं वापस आऊंगा, ऐसे बोला ही नहीं राम ने। अभी पहले बार राम बता रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा, after I fulfill the 14 years commitment that I have given, definitely I will come। तो ये for Bharata is on, okay, a sigh of relief, क्योंकि इसके पहले कौशल्या भी बता चुकी है ये, और अनेक जगह पर ये आता है। देखो लायन का सिंह का जो हंटिंग टेक्निक है, वो जब एक जानवर को अटैक करके खाता है, वो खा के जो छोड़ता है, वो हाइना कैरियन जो है वो आके खाएंगे। हाइना खाया हुआ चीज कभी सिंह नहीं खाए। तो ये बताती हुई कौशल्या बताती है, जो राज्य दशरथ ने राज्य हरण किया, वो क्या राम वापस एक्सेप्ट करेगा क्या? नो वे, ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट।
This is also playing in the head of Bharata. He said, if I'm going to actually become king and rule, Rama will never come and accept this place in me. Rama's greatness is more we read, more we hear about Ramayana, then we know what's this personality. अंत में युद्ध काल, युद्ध सब खत्म हुआ, तो सब सुग्रीव, Vibhishan, everybody and pura Sena, they are all saying, okay, let's go party. Where do we go for after party? So they are all saying, Rama, we are happy. We've come for coronation. Rama is silent. Rama didn't invite anybody. राम ने किसी को बोला नहीं, हाँ आ जाओ तुम लोग सब आ जाओ, मेरा coronation होगा, कुछ बोला नहीं, चुपचाप, किसी को इनवाइट नहीं किया. तो ये लोग बोल रहे हैं, भैया सारा जान देकर हम इतना किया, अपना coronation के लिए भी वो बुलाएगा नहीं है. What is happening here? हाँ, तो आचार्यों को कहना है कि राम ने ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसके बाद भी वो हनुमान को भेजते हैं जाके देखने के लिए, देखो दशरथ अभी 14 साल राजा बन चुका है. If he is very comfortable and happy in what he is doing, I don't know. तो अभी भी राम को ये निश्चय नहीं था कि वो राजा बनेगा, या इच्छा नहीं था कि वो राजा बने. इसलिए वो जो निश्चित बात नहीं है, you call everybody for a big party, you never got the promotion for which you call the party, that what's the fun? Yes, खर्चे एक साइड में और रोना साथ पार्टी में सबके साथ. So what is the point of Rama? This is the greatness of this personality of Rama. And the more we read Ramayana, the more we read it, it becomes more wonderful. This is chapter 111, and this is the last. That Ram commits that he will come back to Ayodhya. So that itself is a big relief. So for a change, I want to fulfill my commitment of Paduka Pattabhishek. Paduka Pattabhishek is a very South Indian usage, but coming straight out of Valmiki Ramayana. ये शब्द प्रयोग किया जाता है जब I think it's one of the kavis, maybe it's Kalidas or somebody. He's writing a beautiful exchange. Discussion होता है राम का coronation के लिए जब सब arrangement किया जाता है, तब दो लोग के बीच में डिस्कशन होता है. एक है पादुका, दूसरा है मुकुट. दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है. तो अभी भैया सेल्फी लेंगे, तो क्या पादुका आएगा, मुकुट आएगा, इंपॉर्टेंस क्या आएगा? सबको दिखने वाला मुकुट तो स्टैंडिंग अप, मुकुट इज द बिग गाय, so मुकुट says, या तेरा कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई मुझे देखा तो बस उधर ही रह जाएंगे, कोहिनूर से बड़ा. You can imagine what Rama's crown should be, yes? So who is going to see you? So then they all say, ultimately हुआ क्या? मुकुट अंदर रह गया, कोई देखा ही नहीं. पूरा 14 साल के लिए राज्य किसने किया? पादुका ने किया. Yes, this is the greatness of Ramayana. This is the greatness of also the Paduka. And बताते हैं कि ये पादुका राज्य भगवान से भगवान के पार्षद का महिमा ज्यादा बताया जाता है. Yes, so like that, Bhagwan's Paduka is also a parshada. Yes, somebody who serves. So they say that Paduka Raja is better than even Rama Raja. Yes, जैसे राम का नाम जो है राम से भी बड़ा. Yes, राम के भक्त, भगवान के भक्त जो है भक्त से भी, भगवान से भी बड़ा. Yes, so this is the kindness of the Lord, कि वो सबको, he is ready to give credit, more credit than himself. अपना कितना क्रेडिट है उससे भी ज्यादा सबको देने के लिए तैयार. That's the beauty of Rama. तो तब बालकनी सीट वाले सब आ गए वापस. तो वो बात में उनके बीच में बात करते हैं कि ये तो अवश्य ऐसे, ये अच्छा हुआ राम वापस अयोध्या नहीं गए, क्योंकि रावण तो बाकी है अभी मारने के लिए. तो they are talking about that. And
वो बताते हैं। अभी लोग सब बताया, अभी देवता गंधर्व ऋषिगण आदि भरत को बताते हैं कि राम का बताया हुआ जो है वही वास्तविक सच है। मान लो राम ने जो बताया, he needed this much convincing to accept this particular thing. So finally he said, अभी भैया ये भी आके बता के चले गए, all these rishis. So Rama is elated. Now Rama's got a smile on his face. अभी क्या बोलेगा देखते हैं. Yes, it's a beautiful game ये दोनों के बीच में. तब भरत बोला, राम की शरण में गिरे और भरत बोलते हैं कि मैं अभी आपका शरणागत, I accept what you're saying. तो राम बोलते हैं जो करना है राज्य के लिए अच्छी तरह करो. तो राम का वचन, let's hear this particular shloka. राम is telling him, कंसल्ट करके डिसीजन ले लो मंत्रीगण के साथ, इंटेलिजेंटली प्लीज टेक केयर ऑफ द किंगडम नाइसली. अभी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो रहा है व्हाट ही शुड डू, बिकॉज़ नाउ मान गया, कुछ और रास्ता नहीं है. तो ये श्लोक जो है ये बहुत लोग कोट करते हैं. लक्ष्मी चंद्रा अपाये वा हिमवान वा हिमम त्यजे हिमवान. हिमालय में the ice may melt and go away from Himalaya. You read the latest news on that. There's a lot of melting ice caps in Himalayas right now. They're expecting some tremors and many things to happen in that zone. So he's saying वो भी हो जाएगा. और जो the splendor that is there in the moon, you see around the moon, you always see an aura around the moon. Yes, maybe that splendor will disappear from the moon. Maybe the ice will disappear from the Himalayas. Or Velam. Ati yat sagaro Velam. Velam means Veli. Yes, we use in Tamil and Malu. So the border, जो लिखा हुआ है, yes, for the ocean. Sometimes when there is a tsunami, it may cross. But na pratignyamaham pituhu. I will never cross the pratignya that I gave to him. Very beautiful. Because I will not abandon my father's place. Can you imagine? This is character. This is quality. और ये हम सुनेंगे तो हम पर हमारे चित्त में उसका असर पड़ेगा. ये हम अपने बच्चों को सुनने के लिए मौका देंगे, then it is going to influence them to develop character. आज देखो कैरेक्टर डेवलप करने के लिए कोई वैल्यूज, ये this stupid education system, sorry for the very heavy word, stupid education system. मुझे याद है मॉरल साइंस करके कितना एक एक लेसन बैठ के हम लोग ने पढ़ा. सब आधा बकवास है. नेहरू जी क्या किया, रोज किधर पहना, चिल्ड्रंस डे क्या था, and for 4 other fellows standing there, and we talk about all this crap. This is morality. These are values. By just seeing how one fellow wore or spoke something else somewhere, this kind of stuff is not going to help. It's a very, very disjointed education system which is going to give no values to our generation. So it's important, please. जिनके अभी देखिए 9-1, Hare Krishna. I will need another 5 minutes extension. Can I? But I'll close on time. I heard this story recently about how when Ramanand Sagar wanted to come up with the serial पहले, government से बहुत objection हुआ. उन्होंने बताया कि ये religious है, हम secular state है, ये नहीं allow नहीं किया जाएगा. It seems first 23 part कुछ आया, 22 part, 23 part रामायण short संक्षेप में बनाया. तो तब उन्होंने उनका रिबटल का कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में राम के बारे में, दशरथ के बारे में, this is influences our, this is our lifestyle, this is our culture, you can't take that away from us. ये आर्ग्यू करके उसको अलाउ किया गया. एंड उसने जो प्रभाव उससे जो हमें पड़े, हमारा सारा देश पर जो प्रभाव पड़ा, the government later recognized
और उस part maybe Ramanand Sagar was asked to introduce something about Nehru. He actually wrote about the book of Nehru. In the introduction, he speaks about it. For his introduction to Ramayana, we need Nehru. So they put something about that in that introduction. But then, when the Ramayana serial came out, the whole nation stopped to watch. That was the true Utsava. How many of us have actually experienced it? Yes? What a glorious time it was. That everything would stop, and people would watch. I think, yeah, it used to be like you will see nothing outside. कुत्ते भी बैठ जाते थे side में देखने के लिए. This, उसका जो असर पड़ा, that we were able to recoup our culture and spirituality thanks to this serial. So Ram का जो कहानी है, it is so effective even today. Bhagwan says, Paritranaaya Sadhanam Vinashaya, I will come back. He came back in the form of Ramayana to actually reinstate. Aaj, in Kashi and all this place, all this work is happening. Why is this happening? Because this set off a trend from there. First Ramayana, then the Mahabharata. Then we see that, Bhaiya, jitna bhi tum secular करके जितना भी हमारा कान में सुनाओगे, हम बदल नहीं गए. We are still the same devotees of Rama and Krishna, and you cannot change this. Yes, and this came out very clearly. I don't have political agendas. I have an agenda that's favorable to spirituality. Yes, and whoever is favorable to spirituality, we should be in a position to align ourselves. So this Ramayana that way is fantastic. Hare Krishna, I can't speak anymore. I've committed to 5 minutes. And I'm speaking about speaking and sticking to those words. So the Paduka was given, and the words were Adiroho Arya Padabhyam Paduke Hemabhushite Rama Hemabhushite, very beautifully ornate. ये पादुका भरत हाथ में लेके आया, उसमें राम अपना चरण रखे और उसको दे दिया. उन्होंने लिया, अपने सर पर रखा. Then Bharata spoke some very important words there. I have to stick to my words. He said, मैं आप जैसे जी रहे हैं उसी तरह जीऊंगा. जटाधारी, I'll sleep on the floor. I only eat fruits and roots. And सारा राज्य आपके पादुका चलाएगा. I am going to be servant. आपके वापस आने के लिए मैं वेट करूंगा. और यदि मैं पहला दिन 14 साल खत्म होते हुए पहला दिन मैं आपको देख नहीं पाया, तो मैं अग्नि प्रवेश कर लूंगा. तो राम बताते हैं उसको, माँ का देखभाल करो, माँ सलामा. सब लोग को माँ सलामा बोला. तो राम ये पादुका सिर में लेते हैं और जाके शत्रुंजय नाम का हाथी है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और इसके साथ अयोध्या वापस उनका यात्रा शुरू हो जाता है. श्री रामचंद्र भगवान की जय. हरे कृष्णा.